Hello everyone, welcome to Manoeuvre Talk with Toppers. So today in this podcast we have Pranjal Rai from Varanasi. So he's a law aspirant, law CD 5 year, and today he will share his experience, preparation strategy about the exam, about the paper and its difficulty level with us. So first of all, welcome Pranjal in this podcast session. Thank you, sir. So, Pranjal, first of all, we want to know about your educational background and where are you from? Something just share with us, and after that, we will discuss about your exam preparation strategy. Hello everyone. My name is Pranjal Rai, and I'm from Varanasi, Uttar Pradesh. And basically, I was from science background, particularly Mm-hmm. PCB. And PCB. recently, I gave MHCET, and I scored 98.7 percentile in 5-year LLB. Mm-hmm. So yeah, means I would like to thank Manoeuvre Education for this. Yeah. Mm-hmm. Chalo, that's great. That's great. So, Hmm. as you said, you are a student, science background student, and PCB, physics, chemistry, bio. Uh, So, medical छोड़ के law करने कहाँ चल रही? सर लॉ में हमेशा से मुझे इंटरेस्ट था बिकॉज फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली आई वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स पब्लिक Mm. स्पीकिंग बी इट Okay, एनीथिंग that's great habit. डिबेटिंग स्पीचेस एनीथिंग सो व्हेन आई न्यू कि यू आर पेड फॉर स्पीकिंग इन लॉ सो इट बिकेम अ नेचुरल चॉइस बट Mm-hmm. अपार्ट फ्रॉम दैट लॉ चूज करने के एक और रीजन ये था कि आई वांटेड टू टॉक अबाउट द इश्यूज जो टॉपिक्स जो कि जिस पे बात होना चाहिए बट Correct, correct. कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है तो और फॉर दैट यू नीड सर्टेन डिग्री ऑफ नॉलेज Hmm. सो फॉर Sure. दैट्स व्हाई सर आई एम परसुइंग लॉ सो यार This is the reason. So, any background, your father, your grandfather, anyone is a lawyer या फिर advocate. नो नो सर आई So विल बी द फर्स्ट basically, जनरेशन लॉयर if you will do the law and if you will make your career, so you will be the first generation lawyer in your family. यस सर Okay, okay, that's great. So basically, as a science student, you started the preparation for this exam. So guys, those who are watching this podcast, so you can understand even you are from the art background, commerce background, science background. अगर से interest है तो आप law entrance से सारे appear कर सकते हो, दे सकते हो. Okay, now coming to the next question. So basically, when you started the preparation for this exam, yes, Sir, Pranjal. I started my preparation for MHCT, Mm-hmm. particularly after my CLAT results. Like I Okay. was getting a tier 3 NLU, but Mm-hmm. for locational advantage, I thought ki I should appear for MHCT also once. Mm-hmm. So that's why I gave like I started my prep from I think from January itself. I started my Mm-hmm. prep. So yeah. ओके ओके सो बेसिकली फुल फ्लैज में जो भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया फॉर द एमएच लॉ सीडी 5 ईयर के लिए फ्रॉम जनवरी बट Hmm. व्हाट अबाउट द क्लैट क्लैट के लिए कभी से आपने स्टार्ट किया था Sir, for CLAT also I started my prep after my boards exam. Like before that, when I was in 12th, I was not हम्म knowing कि CLAT जैसा भी कुछ होता है because I was from science background. हम्म But हम्म after researching a bit, so I came to know about CLAT. So yeah, from I think from April I was preparing for CLAT. so after board exam you started to searching about these exams so how you Mhm. come to know about the clat about the msct and about the maneuver Yeah, sir, from online only, like from YouTube videos. I saw your videos and mm-hmm. I also saw your podcast, and also that day only I manifested this one day I will sit there and I will also give my interview. Chalo, So that's yeah. great and how you are feeling now Yeah, sir, now I am feeling very much excited. Like, great. yeah. And what was your first reaction when you saw your result first time? Ki, oh, this is my score. And what Yeah, was your sir. expectation? Sir, I was not expecting this score because everyone was saying that their paper went well, Hmm. and but when I checked my scores from the answer key, so I was Hmm. getting 124. So then I was sure कि I will get something with this score. So yeah, Hmm. then I was happy. Yeah. So 124, your score as per the answer key, which is Yeah, not sir. bad. It's a very great score, and hope so you will convert the best college. Yes, sir. Thank you, Okay, sir. okay. And as you said, ki, before that you were preparing for the CLAT and then MSCT exams from January. So basically, what do you think? What is the difficulty level of the exam? Like for MSCT, the paper is not that difficult. Yeah, the Hmm. paper is
easy only, but the competition is really high when it comes to Right. OMS student. Mm-hmm. Yeah, so for that you have to be above average in each and every section, Correct. because you have to be perfect like in each Mm-hmm. and every section. So when I was preparing for CLAT, so in CLAT the problem is with the passage, like you have to complete the whole Correct. paper in 2 hours, but Mm-hmm. that's not a problem in MHCET. Like you can easily complete your paper in 2 hours. The Mm-hmm. problem is ki there are so many things to cover, yeah, because generally the questions are वन लाइनर फॉर्म्स, लाइक एक Mm-hmm. वन लाइनर फॉर्म्स के क्वेश्चन आते हैं आपका जीके में और हर जगह, और Mm-hmm. स्टैटिक से भी अच्छा खासा आता है. सो Correct. फॉर दैट मैंने फिर आपके वेबसाइट से देखा मैन्यूवर Mm-hmm. के, और फिर वहां से वीडियोस को देखा तो काफी हेल्पफुल था. हम्म. तो बेसिकली अगर से आपको कुछ डेली शेड्यूल कैसा रहा, किस तरह से प्रिपरेशन करते थे, इफ यू हैव टू गाइड सम स्टूडेंट कि आप डेली बेसिस पे इस तरह से प्रिपरेशन करो, इंग्लिश के लिए ये स्ट्रैटेजी रखो, एंड लीगल के लिए ये स्ट्रैटेजी रखो, रीजनिंग के लिए ये स्ट्रैटेजी रखो, सो व्हाट यू कैन सजेस्ट टू अपकमिंग एस्पिरेंट? Yeah, so for them, I would like to say कि consistency is very much important. हम्म. If you are preparing for any exam, हम्म. okay, means hours also matter, but you should be consistent. Even if you are studying 2, 3, 4, 5, whatever hours you are studying, giving हम्म. to MSCT, you should be consistent. राइट. So my strategy was कि I made a to-do list, and हम्म. what I used to do is whenever I completed any task, so I will tick on that uh, in front of that subject, particular विच इज subject. ग्रेट So हैबिट. yeah, so the level of satisfaction it gives you. So yeah, like you can also do this if you are upcoming aspirant. So हम्म. because these small things keeps you intact with your goals. So yeah, sir, that was my strategy. And one more thing was there ki in my home there was a tradition, like हम्म. every day whatever I have studied, I have to tell that to my father. And telling does not mean कि I have to only tell the topics which I have studied. No, I have to explain him each and everything what I have studied from Oh, morning to evenings. And that's then great habit in your family. yeah, and he will also counter question me. So for that Mm-hmm. I need a proper knowledge about that topic. So yeah, means his Mm-hmm. contribution was also there in my I think journey. your father is also very educated person. Yes, sir. So that's why he can check you what you are Yeah. studying and what is your level. And I think this is a very a good thing you mentioned here. So guys, those who are watching this podcast, so you can learn this thing from the प्रांजल की. अगर से आपके घर में मम्मी पापा भाई बहन वॉट एवर अगर से थोड़े से भी आपसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, या फिर आप जैसे आपसे लोअर किसी भी स्टैंडर्ड में है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टडिंग इन 12, अगर वो 10th में भी है, तो एटलीस्ट वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप क्या पढ़े. तो आप सेल्फ इवेल्युएशन के लिए उनको भी आप हेल्प ले सकते हो. दे विल चेक योर आंसर. यू कैन जस्ट से कि चलो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जस्ट लिसन हाउ इज करेक्ट. ओके, सो ये सब बेसिक प्रैक्टिस है फॉर द इवेल्युएशन के लिए. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो बेसिकली 5 सेक्शन होते हैं इस एग्जाम में, Yes, sir. राइट? तो सबसे डिफिकल्ट सेक्शन कौन सा था? So for me, सबसे difficult, of course, GK था, the most infamous section. जीके. GK, yeah, sir, because there are so many things to cover, but हम्म. yet like तब भी आपका कुछ कहीं ना कहीं छूट ही जाएगा, वो उसकी हम्म. खासियत है उस सेक्शन की. राइट. But mostly what people do is they give extra time हम्म. to GK. They should give time to GK, but it should be in a much more uh, calculated manner. Like हम्म. if you are giving time to GK, you should also check for other section also. Yeah, most of the राइट. people they neglect other section and they just हम्म. focus on GK. So yeah, I means for and apart from that, quant was also a problem. Like I was from science background, but I was हम्म. from PCB, so I was हम्म. not that much good in math. But in MSCT, that's not a problem. Like the questions are मैथ लेवल इज इजी. yeah, yeah. ओके, सो मॉक के लिए क्या स्ट्रेटेजी थी? हाउ मेनी मॉक यू अटेम्प्टेड एंड क्या उसमें क्या स्कोर थे आपके? सर मॉक MSCT में तो मैंने ज़्यादा नहीं दिए, 10 to 20 मॉक्स मैंने दिए थे विच इज नियरली. एनफ. हाँ हाँ, यस सर, तो उतने मैंने दिए थे. बट या मीन्स व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रेप फॉर MSCT द स्कोर्स वर रियली लो, but it gradually increased and my highest score in mock was
nearly 126, 127. Yeah, and Mm-hmm. in MHCET I also scored somewhere close to it. So Mm-hmm. like mock also helped me. I used to give mock to know where I am lagging behind, which topic I have to cover. So for that reason, I used to give mock, not for the sake of scores and all. Mm-hmm. So yeah, yes sir. So basically mock point of view, what you can suggest new aspirant कि कैसे मॉक लिखना चाहिए? क्यों बहुत सारे लोग एक दो मॉक टेस्ट लिख के डिमोटिवेट हो जाते हैं, अरे ये तो इतना ही है, 60 आया 70 आया, अभी क्या आएगा, कितना पढ़ेंगे? बट कंसिस्टेंसी अगर से रखते हैं तो काफी अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिलता है। तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, इफ यू कैन शेयर, सो इट वुड बी बेटर फॉर द न्यू एस्पिरेंट। हाँ, लाइक मॉक आप दो, लेकिन आप मार्क्स के लिए मत दो। बेसिकली हम्म। आप मॉक इसलिए दो कि आपके कौन से टॉपिक अभी भी मिसिंग है, वो आपको उससे पता चलेगा राइट। कि उस पे आप ज्यादा फोकस करो। मार्क्स तो ऑफ कोर्स मॉक्स आर डिजाइन इन दैट वे कि आपके स्कोर्स उसमें थोड़े कम आएंगे, क्योंकि वो डिफिकल्ट थोड़े बना ही जाते हैं आपकी प्रैक्टिस के करेक्ट। लिए। एक्चुअल पेपर उतना डिफिकल्ट आएगा नहीं। तो राइट। इसलिए मॉक से आप डिमोटिवेट मत हो, आप उसको दो और उससे सीखो कुछ। दैट्स द हम्म। मेन रीजन। और उसके बाद आप एनालाइज भी करो उसको। हम्म। तो या दैट्स व्हाट आई विल से। Okay, okay, that's great. And as you said कि you are involved in some other activities also. So how you can manage the time? Because बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कॉलेज है और ट्वेल्थ का स्टडी भी रहता है, बोर्ड भी रहता है, तो देयर इज अ डिफिकल्टी टू मैनेज द टाइम कि बोर्ड पे फोकस करे कि इस पे प्रिपरेशन करे। सो व्हाट वाज योर बेसिकली स्ट्रैटेजी फॉर इट? या तो मेरा तो फिक्स था, लाइक आई हैव टू गिव सर्टेन टाइम टू MHCET। तो हम्म। आई यूज टू गिव 3 to 4 hours only per day, but हम्म। I was consistent every day. Like I have to, कंसिस्टेंट। yeah, I was consistent कि I have to give this much amount of time every day to हम्म। MHCET prep. And what I will do in that time, I will solve some questions. Like there are हम्म। many websites also राइट। where you can get one-liner question, हम्म। and books are also there. So yeah, means you should be in that thing कि आप अगर दे भी रहे हो कम टाइम, अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो आप उतना दो। हम्म। रोज दो, लेकिन जितना भी दो करेक्ट। आप रोज करो उसको। सो या दैट्स द थिंग। So basically consistency is very important if someone is preparing, and daily basis पे जो भी टाइम दे रहे हो उसको अच्छे से फॉलो करते रहो गाइस। आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू द एनी डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, क्योंकि बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है अभी के टाइम पे। या सर, तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, काफी मैं हम्म। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता था। सबसे पर बड़ा डिस्ट्रक्शन यही है आजकल। या सर, सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने अपना पूरा जो सोशल मीडिया है मैंने सबको डीएक्टिवेट कर दिया था चलो फॉर दैट्स 1 year। लाइक फ्रॉम अप्रैल ओनली आई डीएक्टिवेटेड ऑल माय सोशल मीडिया अकाउंट्स। और उसके बाद फिर जब मेरा हो गया, ऑफ कोर्स जब एग्जाम रिजल्ट जब आ गए, उसके बाद मैंने हम्म। फिर वापस डाउनलोड किया। तो काफी वो डिस्ट्रैक्शन होता है कहीं ना कहीं। तो आपको, ये आपके ऊपर है, आप कैसे उसको हैंडल कर पाते हो। अगर आपको आप हैंडल कर पा रहे हो तो आपको डीएक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे साथ हम्म। क्या था कि मेरे को फुल्ली फोकस करना था, इसलिए मैंने हम्म। डीएक्टिवेट किया था। चलो ग्रेट। एंड उसी सोशल मीडिया में यूट्यूब भी है जो काफी हेल्प भी करता है या सो प्रिपरेशन या के लिए। यूट्यूब को मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया से मतलब मेरा हाँ हाँ हाँ, इंस्टाग्राम हो गया, वो इंस्टाग्राम, फेसबुक हो यूट्यूब तो गया, ऑफ कोर्स अगर व्हाट्सएप आप हो गया। यूट्यूब तो बहुत बेनिफिशियल है। आप वहाँ से पढ़ सकते हो। चैनल जो है आपका भी, वो सब मतलब काफी स्टडी मटेरियल आजकल तो सो आप यूट्यूब पे भी। मैन्यूवर से कनेक्टेड भी रहे, काफी कुछ वीडियोस भी देखते थे, एंड व्हाट यू कैन सजेस्ट अदर स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज द बेसिकली रोल ऑफ द क्लासेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम? सो या मीन्स मैं यही कहूंगा कि जस्ट ट्रस्ट योर टीचर्स। हम्म। जो भी वो कह रहे हैं उनको फॉलो करो, ठीक है। और हम्म। क्योंकि ऑफ कोर्स उनके पास नॉलेज है, वो उनको पता है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। मोस्टली पीपल व्हाट दे डू इज दे रन बिहाइंड सो मेनी सोर्सेस एंड ऑल। या सो करेक्ट। कीप योर सोर्सेस लिमिटेड। जितने करेक्ट। भी आपको जो जो भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से, आप मनोवर से हो, कहीं से भी हो, आप उन पे स्टिक रहो, उनकी बातों को फॉलो करो, सो यू आर गुड टू गो। ठीक है, हम्म। तो या दैट्स व्हाट आई विल से। सो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट चीज आपने मेंशन किया कि इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द लॉट्स ऑफ द थिंग, जस्ट हम्म सेंट्रलाइज एंड प्रॉपर जो स्टडी मटेरियल उसको फॉलो करो, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, तो फिर जो आप हार्ड वर्क करोगे उसका काफी बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा, इंस्टेड ऑफ
जस्ट डूइंग द दिस एंड दैट, तो वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है और आपका एफर्ट वेस्ट होता है गाइस। सो बेसिकली इसीलिए हम absolutely. पॉडकास्ट कंडक्ट करते हैं कि जो एक्चुअल एस्पिरेंट है उनके गाइडेंस को लोगों तक मैसेज पहुंचे, उनकी स्ट्रैटेजी आप लोगों तक पहुंचे। तो जो लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हो, अच्छा लगे तो लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पीयूष। सो व्हाट यू कैन सजेस्ट, अगर से आपको कोई फाइनल सजेशन देना हो न्यू एस्पिरेंट को कि क्या क्या चीजें फॉलो करें, कि अगर से वो फॉलो करेंगे तो दे विल गेट डेफिनेटली गेट द बेटर स्कोर इन दिस एग्जाम। या लाइक कंसिस्टेंसी, मैंने जैसे कि बोला, कंसिस्टेंसी इज ट्रस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। योर सोर्सेज और just keep faith in yourself. Like हम्म I have seen most of the people, they feel demotivated ki the हम्म in MHCET the competition is really high, which is true, but हम्म every year people are getting selected, so why can't you? So राइट। ये आप अपने से आपको faith रखना है खुद पे and enjoy the process, enjoy the journey more हम्म, than the destination, because you will get there, वाओ दैट्स but ग्रेट। आप प्रोसेस को एंजॉय करने लगते हो तो बिकॉज इन माय शॉर्ट life experience, I have seen people coming from nowhere and हम्म achieving so much in their life. So अगर आप हार्ड वर्किंग हो, so you will one or the other day you will be somewhere, uh, so yeah, that's what I will say कि काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपने मेंशन किया कि फॉर एग्जांपल कंसिस्टेंसी तो है ही है, एंड एक मोटिवेट रहो खुद को रख के, अपने आप पे ट्रस्ट करो एंड फेथ रखो, एंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आपने मेंशन किया कि इस प्रिपरेशन जर्नी को एंजॉय करो। डेस्टिनेशन तो ठीक है, कुछ ना कुछ अच्छा ही हो ही जाएगा, अगर हार्ड वर्क किया तो डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। बाय द वे, किसी चीज को लेके वरी नहीं होना है फ्यूचर को लेकर के। ओके, तो अब लास्ट क्वेश्चन पीयूष, प्रांजल, last question. So what is your future goal basically? sir, like there are many things, but yeah, I will explore in the upcoming 5 years. Hmm. The end goal is to serve Bharat in whatever way possible. Hmm. So yeah, I mean, that's what I will say Okay, for now. okay. Yeah. Okay, Pranjal, thank you so much to come here to share your experience to our students, our upcoming students, those who are preparing for the MH Law CET 5 years. So hope so this podcast will be helpful for them, for their preparation, so they can understand the difficulty level about this exams, preparation strategy, and they can motivate themselves with this discussion. Once again, thank you so much. Any final comment from your end? थैंक यू सर। नहीं सर, वही कि ट्रस्ट करो, और मैन्यूवर एजुकेशन का काफ़ी बड़ा रोल था मेरे प्रेप में, Hmm. तो ऑफ कोर्स अगर जहाँ भी आप कर रहे हो, आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो या ऑनलाइन कर रहे हो, Hmm. जस्ट स्टिक विद देम और दे विल टेक यू हियर यार। तो आप भी नेक्स्ट यहाँ पे बैठ सकते हो जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, तो चलो, यार दैट्स ग्रेट। लास्ट में जाते जाते आपने काफी लोगों को मोटिवेट कर दिया। ओके, सो जो लोग भी इस हाँ। पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप भी इस पॉडकास्ट का पार्ट हो सकते हो और काफी अच्छा स्कोर करके, सबसे बड़ी चीज है कि आप जो अच्छे कॉलेजेस हैं वहां पे एडमिशंस करके आप एक बेटर करियर स्टार्ट कर सकते हो। तो आई एम विशिंग ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट प्रांजल, यू एंड to all new aspirants, those who are planning for the next years. So just start your preparations, just connect with right platform, just start your preparation under the guidance of the expert faculty, then you can easily achieve whatever you want. Okay, chalo, थैंक thank यू you. सो मच सर, थैंक यू।